children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will learn about punctuation. Let's learn. Read the following sentences. This is Meera. T capital M capital. What is Meera doing? She is playing with her toys. What a beautiful doll. In these sentences, we see that a sentence begins with a capital letter. A proper noun also begins with a capital letter. इसमें क्या देख रहे हैं हम कि सेंटेंस कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है और जो प्रॉपर नाउन है जैसे मीरा ये भी कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है. A sentence ends with a full stop. लास्ट में फुल स्टॉप भी है. क्वेश्चन एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. जिसमें पूछा गया है उसमें क्वेश्चन मार्क भी है. A sentence with sudden cry or remark ends with an exclamation mark. Exclamation mark like this. तो जहाँ exclamatory sentence है उसमें exclamation mark भी है. These sign or signs are called punctuation marks. We use punctuation marks to make our writing sensible and correct. Now read this sentence. Rohan purchased pencils, pens, crayons, notebook and rulers from the store. Now read this sentence. Rohan purchased pencils, pens, crayons and rulers from the store. Now we have put commas to separate the items of list. जो items की list है जैसे पेन, पेंसिल, क्रेयॉन्स, रूलर्स, इनके बीच में क्या पुट किया है? कॉमा. तो ये क्या है? हमारा पंक्चुएशन मार्क है. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज. यू कैन प्रैक्टिस इट.